हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQs। ये IS 2014 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 10 मार्क का क्वेश्चन। सॉल्व ग्राफिकली, मैक्सिमाइज दिस z इक्वल्स टू 6 x1 plus 5 x2 subject to the given conditions. Now, first of all, I'll write steps here. So, जो मेन स्टेप्स हैं इसमें, फर्स्ट स्टेप इज कि हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड स्टेप, हम फाइंड आउट करेंगे परमिसिबल रीजन के बारे में, कि परमिसिबल रीजन वो रीजन है जहां से हर एक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी ये कंडीशंस को। एंड थर्ड पॉइंट इज हम फाइंड आउट करेंगे एक ऐसा कॉर्नर जो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट एक्सट्रीम कॉर्नर का, कोई सा भी एक पॉइंट एक्सट्रीम कॉर्नर का हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। So first of all, we'll draw out the graph, then we'll find out permissible region, then finally we'll check at all extreme corner points. Then we'll check at all extreme corner points to get the optimal solution. So first of all, let's try solving this. Write equation like 2x1 plus x2 equals to 16. इसको आप देख सकते हो, इसको अगर इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखो, दैट इज x by 8, x1 by 8 plus x2 by 16, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो रही है। एंड नेक्स्ट इज x1 plus x2 इक्वल्स टू 11। सब इक्वल्स टू वाले पार्ट ले लूँ तो यहाँ 11 लिखूंगा, तो यहाँ से हमें एक 1 मिलेगा। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ इसी तरह थर्ड इक्वेशन जो है x1 by 6 plus x2 by 3 इक्वल्स टू 1। इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि x1 x2 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। नाउ अगर हम थर्ड इक्वेशन लें, फोर्थ इक्वेशन 5x1 by 90 plus 6x2 by 90 इक्वल्स टू 1। तो ये जो 5x1 by 90 और 6x2 by 90 है, ये आप देख रहे हैं, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो दिया हुआ है। तो दिस इज 8, दिस इज 16, and if we'll divide by this will be 18, and if I'll divide by this will be 15. So maximum in x1 part, these are the rough work what I am doing here. So maximum in x1 part you can see that is 18, maximum in x1 part is 18, and maximum in x2 part is 16. So we need to make graph accordingly. First of all, we need to find out these, so that what should be the scale of making graph. Now considering these formulas, now I'll make graph. So consider the graph given by this. Consider this as x1 axis and this as x2 axis. Now I'll try making graph here. So first I'll draw this. Consider it as this is 5, this is 10, and this is 15. Because maximum is x1 18, so 18 will be here something. And again try this as well, as this is 5, this is 10, and this is 15. So 16 is maximum, which will be represented here, and 18 will be represented here. Now taking the equation number 1, that is 2x, this 2x1 plus x2 equals to 16, that can be written as this. So at x equals to 8, consider x1 equals to 8 here, and x2 equals to 16, so x2 equals to 16 here. So I'll join 8 and 16 from here to here. So this will be 2x1 plus
x2 equals to 16 line. Okay, now next point is x1 plus x2 is less than or equals to 11, that is 11 11. So this will be the 11 part and this will be the 11 part. So I'll try joining this 11 with the straight line with this 11. So this point, this formulation, this equation will be x1 plus x2 is equals to 11. Let me erase this. Now next will be x1 by 6 plus x2 by 3. So x1 would be 6 somewhere here and x2 would be 3 somewhere here. So this will be here. So I'll draw this graph as this. Okay, so this will be x1 plus 2x2 equals to 6. Now last, 5x1 plus 6x2 is less than 90. So that will be x1 at 18, that is here, and x2 at 15. So x2 at 15, and from here I'll start x2 at 15 and take it till 18. So this is not a straight line, you can make a straight line there. So this is 5x1 plus 6x2 equals to 90. So these are the equations. Now to find the permissible region. So permissible region को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशंस, और ये दो लाइंस तो हमने दिखाई नहीं, ये x1 ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगा और x2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा. नाउ टू चेक द कंडीशन 2x1 plus x2 less than 0. First of all, I'll take origin. This is origin as 0, 0. Now we'll satisfy the condition 0, 0 in the equation. So if we'll put 0, 0 here, you can see 0 plus 0, that comes 2 into 0 plus 0, that is 0 is less than 16. तो इसका मतलब है कि this 2x ये वाली लाइन के हमारा परमिसिबल रीजन 0 की तरफ ही लाई करता है. ओके, सिमिलरली x1 plus x2 लेस देन 0, अगर 0, 0 फिर से देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन जो x1 plus x2 equals to 11 है उसके भी इस तरफ लाई करता है. एंड नेक्स्ट इज x1 plus 2x2 is greater than 6. अगर इसमें हम 0, 0 पुट करें तो 0, 0 is less than 0, 0, 0 is greater than 6, तो false, मतलब कि ये 0 के अपोजिट साइड में लाई करता है. So this will be the reason. Again I'll put 0, 0 here. Maybe I'm explaining and it is getting too long, but you can solve it easily once you learn that. So अगर हम 0, 0 पुट करें तो again 0 is less than 90. तो ये ट्रू है, इसका मतलब 0 की तरफ ही लाई करेगा, तो 5x के हम 0 की तरफ ही लाई करेंगे. तो फाइनली व्हाट वी गॉट द परमिसिबल रीजन एज, और ये आपको पता है कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो इसको इधर ही लाई करते हैं. तो हमारे पास जो परमिसिबल रीजन आया वो है ये वाला रीजन. अब इस परमिसिबल रीजन में आप देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से थर्ड पॉइंट इज वी गॉट टू नो परमिसिबल रीजन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट. तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, this point, second point. Let me change the color. So first point will be this, second point would be this, third point would be this, fourth point would be this, and fifth point would be this. Now I'll write A, B, let me name this A, B, C, D, and E. Okay, so let me write it clearly. So I'll change this. Now I'll write it as E. Okay. तो अब आपको A सॉल्व करने के लिए आपको ये x1 plus x2 equals to 11 और x1 equals to 0 करना पड़ेगा. तो A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, 11.
इस पे आप z की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे आप b सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो b जो है वो इंटरसेक्शन है दिस 5 2x plus x2 equals to 16 and this point x1 plus x2 equals to 11। तो b की वैल्यू जो आएगी वो 5,6 आएगी, आप इसको चेक करके देख लेना। एंड c की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 8,0 एंड d की वैल्यू जो आएगी दैट इज 6,0 एंड फाइनली e की वैल्यू जो आएगी, e की वैल्यू आएगी 0,3। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमाइज 6x1 plus 5x2। अब हम इस पे अगर हर पे वैल्यू रख दें तो what we'll get z, here we'll get z equals to 55। if I'll put here 6 5 the 30 and 6 5 the 30 that is 60 and again 8 6 the 48 and 0 and 6 6 the 36 and 5 3 the 50। so we need to maximize this z, you can see that using the property, you can write here using the property that at least one extreme point corner of permissible region will give optimal solution. So hence the optimal solution will be, this is maximum, so the optimal solution, here you can write optimal solution is x1 equals to 5 and x2 equals to 6। so this is the required optimal solution. That is all in this lecture. Thank you.